Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study that what happens when an AC voltage is applied to an inductor. Okay, and how it is different when like an DC voltage is applied to an inductor and when an AC voltage is applied to an inductor. Okay, and uh, because we know that AC voltage contains some frequency. Okay, it oscillates with some frequency, or we can say it has some angular frequency, and because of that there will be a change in current which will be flowing through the inductor. And then we can find out the, we can say, the expression of current. And then uh, we can find out that what how the current and the voltage is different from each other, and like in the sense of like what is the phase difference between them and how the graphically they look like. These all things we are going to derive, and later on we are we are going to find out that what is the instantaneous current, and what are the instantaneous power supplied to an inductor that is connected in this circuit. And then we can find out the average power also. Okay, so let's say here in this circuit we are assuming that uh, we have applied an external voltage V equals to such that let me write here. Here we have applied one external voltage V equals to function of time V naught sine omega t. Okay, where V naught is the maximum voltage and omega is the angular frequency, as we all know that. Here V naught equals to amplitude, or we can say maximum voltage, and omega is angular frequency. Okay, now how can we find out the current which is flowing through the inductor? We can apply simply Kirchhoff's loop rule, or sometimes it is called as Kirchhoff's voltage law, KVL also it is called. तो जब हम इसमें KVL लगाएंगे, और we will take the direction of KVL in the similar as we have drawn in the circuit diagram, clockwise direction. ठीक है, जब इसमें clockwise direction में KVL लगाएंगे, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, देन इक्वेशन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं. Apply Kirchhoff's loop rule. Okay, then what we will get in this from this circuit, as we know that the external voltage is V, so that's why we have to write it as it is V. So the equation will be minus V plus VL equals to 0. Now if now you must be wondering that what is VL here, Newton. देखो VL क्या होगा यहाँ पे, VL will be the voltage across inductor, and L is the symbol that is used for self inductance L. ठीक है, तो as we know that V नोट VL क्या होता है अपने पास, VL is voltage across inductor, and that is L di upon dt. और ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन हम कर रहे थे. So VL equals to L di over dt. Now we will put that in this equation, and we will get minus V plus L di over dt equals to 0. ठीक है, अब V का भी एक्सप्रेशन रख देते हैं जो हमने एज्यूम किया है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई किया है. सो L इक्वल्स टू di over dt equals to V, and when we will substitute the equation of V, we will get V naught sin omega t. ठीक है, अब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन, so that we will get the current I which is flowing through the inductor L. So equation will be di
अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी नोट बाई एल साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो टाइम डेरिवेटिव एक तरफ और करंट वाला एक तरफ। सो वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। Okay, now we are going to integrate it. So integrating both sides, what we will get after integration we are going to see now. So integration over di equals to v naught upon l integration over sin omega t into dt, अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगा। और why we have put v naught upon l outside of the integration, because we know that v naught is the maximum amplitude, or we can say the maximum voltage of the external voltage, and L is the self inductance of the inductor, and both of them are constant, so that's why they are not going to contribute in the integration. Like in the contribution, in the sense we can say that they are time independent terms, so there will not be particular integration of that, so that's why। तो वी नोट और वी नोट अपॉन एल को हमने आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया। आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन विल बी आई इक्वल्स टू वी नोट बाई एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा कोस माइनस कोस ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स हमने पुट नहीं करी है। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नोट बाई ओमेगा एल एंड कोस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। Now we have to find out the value of constant. So as we know that the voltage V, as we can see its equation, that V equals to V naught sin omega t, and it will be oscillating around zero, right? यानी कि जो वोल्टेज V है वो जीरो के अराउंड ऑसिलेट करेगा। जीरो मीन्स जीरो वोल्टेज के अराउंड ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली जो करंट है अपने पास, that current will also be going to oscillate around zero. Okay, and this is going to contribute, this is going to indicate that the value of constant is also, the value of constant in the equation of current will also going to be zero. ठीक है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा अपने पास। तो इसका वैल्यू जब जीरो होगा तो अपने पास करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? दैट विल बी फंक्शन ऑफ टाइम and minus of v naught upon omega l, सॉरी cos है ये, तो v naught upon omega l cos ओमेगा टी, ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक चीज इस इक्वेशन में एक चीज देखना है कि हियर कोस ओमेगा टी जो है, कोस ओमेगा टी इज ए साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, वो डायमेंशनलेस होगा। तो जो करंट जो अपने पास क्वांटिटी है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? करंट की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास करंट है दैट इज आई and function of t. So the value of v naught upon omega l will also have the direction of current. Sorry, the dimension of current. Okay. So here, and one more thing, that in this equation we know that as per the Ohm's law, current I must be uh, like the voltage divided by the resistance R. जब हम जब अपन लोगों ने रेजिस्टर को सर्किट में
इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस केस में अपने पास रेजिस्टर नहीं है, अपने पास इंडक्टर है। तो इस केस में अपने पास ओमेगा एल है, वो किस तरीके से किस तरीके से इसमें बिहेव करेगा, वो दैट विल बी हियर XL will be equals to XL XL will be equals to ओमेगा एल। और इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंस, रिएक्टेंस रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर की वजह से रिएक्टेंस अपने सर्किट के अंदर आएगी, और ये सिमिलर काम करेगी जैसा कि रेजिस्टेंस कर रहा था, यानी कि करंट को फ्लो करने में इट विल द रेजिस्टेंस वाज रेसिस्टिंग द करंट फ्लो। सिमिलरली हियर द रिएक्टेंस विल आल्सो be going to resist the current flow in the circuit, and it will have the dimension of resistance itself। ठीक है, यानी कि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे रेशियो जो है वी नोट ओवर ओमेगा एल, तो वी नोट तो ऑलरेडी वोल्टेज का डायमेंशन रखता है, तो ओमेगा एल है उसको रेजिस्टेंस का डायमेंशन रखना पड़ेगा। देन ओनली डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड है उसकी यूनिट्स और लेफ्ट हैंड साइड है उसकी यूनिट इक्वल होगी। तो ओमेगा ओमेगा एल का डायमेंशन क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगा, वो होगा ओम। सो द एस आई यूनिट ऑफ एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल इज ओम्स। ठीक है, तो ओम इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी और इट विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस, और बेसिकली इट्स नेम्ड एज रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। अब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन विल बी रिटन एज आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट ओवर एक्सएल कोस ओमेगा टी। अपने पास ये इक्वेशन हो गई है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या देखना है कि जो अपने पास अ, जो वोल्टेज का फंक्शन, वोल्टेज जो अपने एक्सटर्नल वोल्टेज लिया है दैट इज वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट को भी उसी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, दैट सो दैट we can find out the phase difference, or we can check the similarities between two functions of current and voltage. So we know one trigonometric identity that tells us that, let me write here, since एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है अपने पास साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास हम थीटा की जगह पे ओमेगा टी रखेंगे, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी का इक्वेशन अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और हमें इस इक्वेशन से क्या चाहिए? माइनस कोस ओमेगा टी चाहिए, तो दोनों तरफ आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक साइन की आइडेंटिटी होती है कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, तो अपने पास जो माइनस साइन के आउटसाइड है वो इसको साइन साइन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन विल बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी। ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, वही सेम इक्वेशन अपने पास इस करंट की इक्वेशन में भी है। ठीक है,
आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1। तो जब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूटिंग, 1 सेकेंड, इक्वेशन 1 और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 1, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा उस केस में? I इक्वल्स टू वी नोट अपॉन एक्सएल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप चेंज क्या कर सकते हैं? जो वी नोट ओवर एक्सएल है उसको आप लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट, और वी कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। सो द इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड एज, it is function of time, so that's why I naught sin omega t माइनस पाई बाय 2। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ करंट आ जाएगा दैट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट का इक्वेशन आया है यहाँ पे आई नोट क्या है? हियर आई नोट इक्वल्स टू वी नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल। ये अपने पास मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम या फिर समटाइम इट इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब एक चीज और देखना है कि जो एक्सेल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा ओमेगा के साथ, तो वो देखते हैं। बिकॉज वी नो दैट एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओके, तो ओमेगा के साथ उसका किस तरीके से बिहेवियर होगा? एक्सेल विल बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, and sometime it is been asked in the question paper also in your board examinations that state the relation between reactance due to inductor and the angular frequency of the external applied voltage। ठीक है, तो उसके बीच में क्या अपने उसमें रिलेशन बता सकते हैं? आप रिलेशन में बोल सकते हैं कि इट इज एक्सएल इज द reactance due to inductor, and it can be written as xl equals to omega l, where omega is the angular frequency and l is the self inductance of the inductor, and basically here xl is directly proportional to the angular frequency। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में उसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड ओमेगा, देन हाउ विल यू प्लॉट इट? Clearly we can see that here uh, omega and xl both are proportional to each other. So as a result, we will get a straight line and making the angle, we can say 45 degree with the x-axis. Let's draw the graph so it will be easy for you to understand. ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ग्राफ विल बी, ओके, तो आप अभी वाई एक्सिस पे क्या बनाएंगे? एक्सएल को प्लॉट करेंगे। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? ओमेगा। ये हो जाएगा 0, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या टेंडेंसी रहेगी? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको ड्रॉ करते हैं। So that's how the graph between like omega and XL will look like. It will be a straight line. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लाइक व्हाट इज द फेज डिफरेंस? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी arranged the current of the equation of current in the form of sinusoidal function,
And similar function we can say as the voltage was, it was the function of sine, and here the current is also a function of sine wave. So now find out the phase difference so that we'll get any idea about that. So phase difference, okay. So first of all, we will write the voltage, applied voltage, what it is. What is the applied voltage? It is V equals to V naught साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब दूसरा अपने पास क्या है, करंट है। ओके, और वी कैन से फ्लोइंग करंट। तो इसका फंक्शन किस तरीके का है हमने देखा जस्ट अभी। इट इज करंट आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस pi by 2. So here clearly you can see that what is the phase difference between voltage and current. The phase difference is pi by 2 radians. और उसको भी बताने के दो तरीके होते हैं, that we will see that how to uh, answer the questions when they are asking the phase difference, so in terms of voltage and current. So first of all we should write phase difference कितना है यहाँ पे, phi equals to pi by 2। ये है अपने पास phase difference। ठीक है, अच्छा इसको बताने के दो तरीके होते हैं। एक तो वोल्टेज का फेज, लाइक द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट, और दूसरा होगा करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। इफ दे आस्क दैट define the voltage with respect to current, then how will you answer that? See, here the voltage is, you can see that voltage is leading the current by pi by 2 radian. Fine. And if they ask that define the current with respect to voltage, then you have to say that here current is lagging behind by the pi by 2 radian from voltage। ठीक है, कि जो करंट है वो लेग कर रही है पाई बाय 2 रेडियन से वोल्टेज से, और जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को पाई बाय 2 रेडियन से। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट that voltage leads the current by pi by 2 रेडियंस। और सेकंड में आप क्या बोल सकते हैं कि the current lags behind the voltage by pi by 2 रेडियंस। इस तरीके से मैं बताना। अच्छा ठीक है, सिम अब हम क्या करेंगे कि इनका ग्राफ बना के देखेंगे, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम एंड द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम। Fine, and then finally we'll get one idea that how the phase difference is making difference between their graphs, individual graphs. And yes, simultaneously we will draw the graph for their phasors also. Okay, the phasor diagram also we will make, so you will get the exact idea that uh, how the phasor will look like and how their individual graphs will look like. Okay, so let's start making the graph.
Let me draw the coordinate axis. Okay. Here we will make the phasor, and on the right hand side we will make their actual graphs. Okay. So let's start making the graph for voltage. First of all, as we know that the equation of voltage is V equals to V naught sine omega t. It is just a sine wave. So as we know that what is the graphical representation of sine wave, similarly we can make that. So let's draw it with different colors. So we'll get idea that what is the graph for voltage and what is the graph for current. The graph for voltage will be looking like just like a sine curve. Just like a sine curve, it will look like. Now, and this voltage will be V naught. Now let's draw the graph for current I. As we know that it will start by the, we can say, uh, by the phase difference of pi by 2. And if we simplify, we will get just minus cos omega t. So we have to draw the graph of cosine function with minus, or we can say negative sign. So it will start from this point, and the graph will look like the, simply the graph will look like, let me just the pen. Okay, so the graph will start from here at this point, and it will go to in the upward direction first. So the graph will be like, okay, so graph will be like that. So like this, the graph will be, okay. And now this graph is for current I, and this value is minus of I naught. Fine. Because at t equals to 0, as you can see that it will be going to give us the value of minus, we can say sine minus pi by 2, and it is minus 1 only. So at t equals to 0, the value of current is minus I. ठीक है. अब हम इसका फेजर डायग्राम बना के देखते हैं कि हाउ द फेजर डायग्राम लुक लाइक. ओके. मान लीजिए कि ये है आपका वोल्टेज वोल्टेज का फेजर, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, ओमेगा टी वन का एंगल यहाँ पे बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और ये ओमेगा टी वन का फेजर यहाँ पे, ओमेगा टी वन का एंगल यहाँ पे बना रहा है. ठीक है. तो ये है वोल्टेज वी का ग्राफ. और अच्छा, इसके साथ एक रिलेशन भी होता है इसका, जो दोनों हमने इंडिविजुअल ग्राफ बनाए हैं और ये फेजर जो बना रहे हैं, इसको भी आप मैच कर सकते हैं कि किस तरीके से वो होगा. क्योंकि यही हमें आइडिया देने वाला है कि कैसे 95/2 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन का अपने पास फेज डिफरेंस आएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा वी. अब हम बनाएंगे ग्राफ फॉर वो करंट आई. क्या वो किस तरीके से होगा, लेट्स सी. ओके.
तो इस तरीके से यहाँ पे अपन बना सकते हैं करंट का ग्राफ, and it will look like, obviously it will be at 90 degree, so the graph will look like this. Okay, ये हो जाएगा अपने पास करंट का ग्राफ, and this angle is nothing but 90 degree. So now here we can see that that the current is lagging behind the voltage by pi by 2 radians, and the voltage is leading the current by pi by 2 radians. और इनका अलग अलग आप फंक्शन भी लिख सकते हो. फर्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा, इसका, लेट मी राइट इट. अपने पास वोल्टेज है, वोल्टेज का फंक्शन क्या है, इट इज वी नोट साइन ओमेगा टी. और करंट का फंक्शन क्या है अपने पास, as we know that the function of current is I naught sine omega by t minus pi by 2 radians. ये अपने पास करंट का फंक्शन होगा. So that's how their phasor diagram and their individual graphs look like. Okay. Okay. Now our task is to find out that what is the instantaneous power supplied to the inductor. ठीक है. जैसा कि हमने रेजिस्टर के केस में देखा था कि उसमें कितना पावर, इंस्टेंटेनियस पावर आया था, और कितना लाइक instantaneous power was supplied to the register. And now in this case, as we know that here the register is not there, it is the inductor. So इसमें कितना instantaneous power आएगा वो हम देखेंगे. Instantaneous power. Okay. As we know that the equation of instantaneous power is P equals to VI, where V is the voltage and I is the current. अब इनका इक्वेशन पुट करते हैं, अपने पास क्या इक्वेशन बनेगा, P equals to V नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 रेडियंस. ठीक है, ये इक्वेशन है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी P इक्वल्स टू V नोट टाइम्स आई नोट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, एज वी नो दैट इट इज माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी ओनली. तो यहां से अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू माइनस ऑफ V नोट आई नोट साइन ओमेगा टी और कोसाइन ओमेगा टी. ये अपने पास इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन आता है. ओके, नाउ वन वी नो वन trigonometric identity that sine of 2 theta can be written as 2 of sin theta, 2 sin theta और cos theta. ये इक्वेशन होता है sin 2 theta इक्वल्स टू 2 sin theta cos theta. तो अपने इक्वेशन में भी सिमिलर टर्म है sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी. तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ दिस इक्वेशन विल बी P equals to minus of V naught I naught and divided by sin 2 ओमेगा टी. ये अपने पास इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन आ जाएगा. It will be the equation of instantaneous power. Instantaneous power. Now our second task is to find out the average power over one cycle. What will be that? We are going to find out. The average power over one
complete cycle. कितना होगा average power? That we are going to find out. Okay, so let's take average both of the side for from the above equation. So finally we will get average of power P will be equals to average of minus of V naught I naught divided by 2 sin of 2 omega t. ये अपने पास एवरेज का इक्वेशन आ जाएगा, एवरेज पावर का इक्वेशन. ठीक है. नाउ one thing can be taken common, like one thing can be can we can take common, like out of this average, that is minus V naught into I naught divided by 2, because we know that the value of like V naught is the maximum voltage and I naught is maximum current, and 2 is already constant, so they are not going to contribute uh, in the process of averaging the power. ठीक है. दे आर ऑलरेडी कांस्टेंट. कांस्टेंट का क्या एवरेज होगा? वही तो वैल्यू होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले कि 20 का एवरेज निकाल, तो 20 का क्या एवरेज होगा? 20 वही. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आउट देम. नाउ द एवरेज विल बी ऑन द term sin 2 omega t, so it will be sin 2 omega t. Now we know that the average over sin 2 omega t will give us value 0. sin 2 omega t का एवरेज क्या होता है? 0. So that's why the equation will be, the equation of average power will be P equals to minus of V naught I naught divided by 2 into 0. ठीक है. और इस तरीके से ना एवरेज पावर कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट्स. ये अपने पास एवरेज पावर का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि एवरेज पावर का वैल्यू आ जाएगा. So it is the value of average power over one cycle. And because of that, because here the power is 0 volts, so that's why sometime it is the current which is flowing through the inductor, in this case, in this particular case, is called as wattless current, क्योंकि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, पावर कितना कितना पावर सप्लाई किया है ओवर वन साइकिल? 0 वोल्ट्स. So that's why it is named as wattless current also. wattless wattless current. So that's all about the instantaneous power and the average power. And still, if you have any doubt, then you can ask in the comment section. I'll be happy to answer there, or we can make another video also based on that, based on the doubts. Okay, thank you.